हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ IEEE स्टूडेंट ब्रांच। एंड यस, आज का टॉपिक है ABC ऑफ माइंडसेट, जो कि हमारे गेस्ट है हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट शाहकर सर, एंड जिनका आज पॉडकास्ट कंडक्ट होने वाला है। डेफिनेटली कैसा कुछ होगा, व्हाट इज़ द ABC, सारा कुछ हम पॉडकास्ट के थ्रू जानेंगे। आई होप सबके लिए पॉडकास्ट सही होगा। तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच ऑन 1.25x। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुड इवनिंग सर। Good evening. Myself Kuldeep from IEEE student branch. Suresh. Hi. So as it is a first podcast, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको हिंदी प्लस इंग्लिश में रखें ताकि मैक्सिमम ऑडियंस तक हम पहुंच सकें। सो एज आवर टॉपिक इज माइंडसेट, ABC ऑफ माइंडसेट। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में? व्हाट इज मीन बाय ABC एज यू सेड? Okay, before actually talking about the mindset and that to ABC, for me, let me tell you what exactly the ABC means. A, that is attitude. B, behavior. C, changes. So if we have a correct attitude, if we correct our behavior, so I feel that we can bring a lot of changes in our life, and that's why we can change our mindset also. Now you may feel that why we need this thing, what is the necessity? So for that I would like to ask a simple counter question. If you have a smartphone, just Google what is college, or college means, just Google that thing. College makes me, and just tell me what Google give you the suggestions. College makes me, just type this one. What? Depress. Correct. Next suggestion. Feel worthless. Feels like an failure. That means even miserable. Exactly. Most of the college student, what they are searching or what they feel that the university or the college makes them like a depressed. They given a certain tension like that. So I feel that I should this topic particularly to interact with the students. If we have so much negative thoughts, then how to convert that negative thoughts, how to change that mindset into the positive mindset. And today we are going to discuss about that only. See, this is not like that what I feel that for that I would like to share a simple story with you. Story is like that. There was one class in school, and one teacher, she gave an assignment to the student, and she asked like every student to write like that, what I want to be. So all the students, they are writing, I want to be like that, I want to be this. Some student wrote like that, I want to be a hero like my father. Some student like, I want to be a big lawyer. Some student wrote like that, I want to be a good engineer. There was one student who wrote only one thing, I want to be a happy person. And everybody just submitted that assignment. So when the teacher, she collect the assignments, she was reading everyone's assignment, and when she read that particular assignment, she stopped that boy and say, hey, you are not getting the question properly, you are not getting the assignment properly. He replied, what happened, madam? She said, you are getting the wrong question. I asked what you want to be. He replied, madam, you are getting the wrong things. Thing is that life is not about what I want to be. Life is about what I am doing that I should enjoy. That means about the happiness. So thing is like that, we should enjoy what we are doing. Okay, I feel that for the college or the study, this is nothing but a journey, wonderful journey, and you should enjoy this journey. And if we correct this thing, if we have a proper attitude, then definitely we can bring the certain happiness in our life. डेफिनेटली सर, जो आपका इनिशिएटिव है इस चीज़ पर बात करने का, दैट्स सो नाइस, बिकॉज हमें भी यही फील होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे ही थोड़ा लैग हो जाते हैं। एंड आपने ये कब एनालाइज करा कि स्टूडेंट्स के जो माइंडसेट है उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं? आप जब इंजीनियरिंग में थे तब आपको लगा, या फिर अभी एज एन टीचर आपको लगता है? Definitely, this is I discovered from my past experience also.
And whenever I'm interacting with the student, I used to feel like that the student, they are taking much tension about that. They are not enjoying what they are doing. That means they are taking the tensions of their study, certain expectations. Obviously the parents and the teacher, they are expecting a lot from the student, but somewhere at the end, if you are not enjoying what you are doing, you take a burden of that. See, it's like that, it's completely depends upon ourselves how we are taking that particular situation, because situation is not going to be changed, it is remains always the same, but it's our mindset how we are dealing with that. To prove my point, I would like to again share one simple incident with you. There was one boy who got very frustrated and angrily he just went to his home. Some bad day for him, teacher scolded him or something bad happened with him, and he was very angry, and he just went to home. He was very frustrated, very angrily he said that कि why this is happening with me only, ये मेरे ही साथ क्यों होता है, हर बार मेरे ही साथ क्यों हो रहा था. He had a lot of negative thoughts. और ऑब्वियसली ये सब गुस्सा वो निकाल रहा था अपनी मम्मी से बात करते समय, क्योंकि he is the boy who is like you used to talk much with the mothers. His mother was listening, she didn't reply. वो पूरा गुस्सा निकल रहा था, आज मेरी गलती नहीं थी, उसके बावजूद मुझे डांटा गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ये सिचुएशन होते हैं. What mother did, she took one pot, okay, in that pot she put some water, and in that water she put three different things: eggs, a carrot, and a coffee beans. And she put that pot on a gas burner. Obviously we know that after some times that water start boiling. ये बच्चा वो देख रहा था कि मेरी मम्मी मेरी तरफ नहीं देख रही, इन चीज़ों के साथ वो बिजी है, वो और ज़्यादा गुस्सा करता है कि why you are not listening, even you are also not listening to me. Then mother replied, you observed what I did? He said yes. You put a pot, you put a water, now water start boiling, and that three things are there, that is the carrot, carrot, eggs, and the coffee beans. Then mother replied, that is very important now. सबसे पहले ये जो कैरेट था ये इन सब चीज़ों में सबसे strong था, but now see the boiling water, what it does. Obviously we know that what happens to that carrot after that put in a boiling water, नरम हो गया होगा. After the eggs we know that the egg shell वो first delicate था, but the boiling water now make it tough, isn't it? What about the coffee beans? Coffee beans obviously get diluted, get dissolved, and it forces that water to change that color, isn't it? It means that इन तीनों चीज़ों पे बॉइलिंग वाटर का सेम इफेक्ट हो रहा था, लेकिन इन परिस्थितियों को चेंज करने की ताकत सिर्फ कॉफ़ी बीन्स में थी. उसने उस पानी को, उबलते पानी को ही चेंज करने के लिए कहा, उसने अपने गुणधर्म, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं छोड़ी. सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट इफ वी हैव अ करेक्ट माइंडसेट, करेक्ट एटीट्यूड, डेफिनेटली व्हाट एवर द सिचुएशन वी कैन अचीव आवर गोल. I'd like to ask one question about positive mindsetness. In the college life, I want to ask about the always being positive mindset. Is it okay or not okay? And I also like to add about the mindset of the students on this. Does the mindset changing due to over positiveness? No, it's not like that. See, what I feel that happiness or what we are, this is the state of mind, mindset. We can say state of mind. Our mind is actually a very fickle. I believe that. And if we are able to control our emotions, obviously with the certain time we can getting the right on that, how we can control the emotions. But yes, it's completely depends upon your aspect, how you are looking to that particular situation. Then you can achieve that thing. Like, see, for an example, one story I would like to tell, that is from the Mahabharata. We know all the Mahabharata, and the very two famous character, that is nothing but the Lord Shri Krishna and the Karna. This is the conversation between the Karna and the Shri Krishna. Karna was telling to the Shri Krishna, see, all the time bad thing happens with me only. See, when I born, my mother left me.
I didn't got the proper gurus. द्रोणाचार्य ने मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं सिखाया क्योंकि मैं क्षत्रिय वंश नहीं था. परशुराम ने मुझे शाप दिया जब उनको ये लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ. मुझे कई तरीकों का अवहेलना से मुझे हैज़ बीन फोर्स फ्रॉम मेनी, लाइक my character has been assassinated so many times. I was humiliated many times. This is so many bad things happen. The only reason I stand with the with the Duryodhana, like he has done certain charity with me. So why I should not stand with the Duryodhana? In reply, Lord Sri Krishna answered very beautifully, and this is the point we should note it. Sri Krishna told, or Sri Krishna answered him, do you know what, Karna? When I was born in a jail. जैसे ही मेरा जन्म हुआ था, मेरे माता पिता से मुझे अलग किया गया था. जैसे ही मैं चलना सीखा, या जब से मेरा जन्म हुआ, मुझे मारने की कंटिन्यूअस कोशिश की गई, मुझे मारने का प्रयास किया गया. मैं 16 साल तक किसी गुरु, किसी के पास शिक्षा लेने नहीं गया. 16 साल की उम्र में मैं संदीपनी ऋषि के पास आश्रम में गया, तब जाके मैं कुछ शिक्षा ग्रहण कर सका. श्री कृष्ण रिप्लाइड दैट इवन यू मैरिड टू अ गर्ल विच यू वांट. मुझे तो वो भी चॉइस नहीं मिला. मुझे इनफैक्ट दुशासन मिला. मुझे बोला गया कि ये रणछोड़ दास है, जबकि मैं मेरी कम्युनिटी से को बचा रहा था. सो लाइकवाइज, बट स्टिल I stand with the Yudhishthir because the dharma is in his side. I feel that. Situation कैसे भी हो, हमें पता होता है कि हमारे subconscious mind में कि what is the correct and what is the wrong. And if we listen to our subconscious mind कि no, this is the correct, definitely we can say that we can achieve this thing. Okay? So from this story we can get, because see, if Duryodhana by chance would win, तो सब क्रेडिट मिलता था कर्ण को. युधिष्ठिर मिलने के बावजूद श्री कृष्ण को क्रेडिट नहीं मिलने वाला था. बट स्टिल श्री कृष्ण सिलेक्ट अ चॉइस ऑफ धर्मा. व्हाई वी कैन से दैट? बिकॉज हिज सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट व्हाट इज द करेक्ट एंड व्हाट इज द रॉन्ग. सो द आंसर फॉर दैट इट्स वेरी सिंपल. We should listen to our heart, we should listen to our mind, we should focus to that. We know that we are adult, what is the correct and what is the wrong, and then we should select our path. How is social media changing the mindset of students? Definitely, now I feel that this is nothing but an addiction. Social media, it's like an addiction for many students. In fact, see what happens, we are looking for the happiness in this artificial or physical aspect. Like it has been forced for many students that I should post this कि आज मैं इस जगह पे गया, देखिए कि मैंने इस जगह को विजिट किया, I visited to this particular hotel, I enjoyed this dish and like that. Why? He just want to share this thing so that he just want to get more likes and all these things. And those students or the other colleagues who are not able to do or visit that particular place or like that, they feel that अरे यार काश मैं ये जा सकता था. Does it necessary for the happiness that I should visit that place, I should enjoy that particular dish or like that? No. I feel that this is nothing but the certain physical aspect, and if we are looking our happiness in that, as I earlier said, this is nothing but simply a state of mind. If we are looking that, you just tell me one thing, those who are not on like social media are not happy. Yes, they are happy. I can proudly say it like that. My mother, my father, they never use the social media. क्या वो हैप्पी नहीं थे? वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे. मेरे दादाजी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, वो भी खुश थे. क्या उन्होंने कभी किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि हाँ मैंने इस जगह पे गया, मैं उस जगह पे गया? कि वो ऑब्वियसली नहीं. So we should stop like searching and wanting the happiness in this physical aspect. I feel that because it's not, once you realize this thing, then definitely I feel that कि इन सब चीज़ों को आप परवाह ही नहीं करोगे, परवाह ही नहीं करोगे. डेफिनेटली रियलाइजेशन के बाद हम इससे दूर हो जाते हैं. लाइक अगर मेरा खुद का एग्जांपल दूँ तो मुझे
इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक्चुअली 2 है, बट मुझे याद नहीं रहता कि अभी ओपन करना है, देखना है, भूल जाता हूँ। बहुत दिनों बाद याद आता है कि अभी है, कुछ डालना है, सो अभी ऐसा होता है। See, what I feel that we can use this particular social media to sharing the knowledge rather than the photo or all things, whatever the wonderful thoughts you are having. Earlier, what happened? Na? There was the limited medium. Suppose I am a very good poet, I am writing my poem or like that. So it gets a certain days to publish that in either the newspaper or a magazine or what that. But right now, these mediums, it can give you the certain like whatever the talent, use this platform to explore your talent, your hidden talent. If you are a very good I can say that the poet, a writer or whatever, use this particular medium, let your talent to come out, okay, so that the people should know you. What I feel like, sir, I want to ask your thoughts on that. Like, if someone is not on social media, but he still feel pressured, like he was not posting something. Exactly. So, what is your take on that? Take in on that, what I can say that see, a thing is very simple. Until and up till we should not learn that what exactly my happiness, what I want from my life, this is going to be happen. Otherwise, we may feel the pressure for every single thing. It happens generally in the student life also. We always into the comparative mode. Okay. See, but if we have a correct attitude, if we change our behavior, then we can deal with this thing. I would like to give a simple example of this thing. See, like whenever many motivational speaker, whenever they are talking about the attitude, they always talk about the lion attitude. Are you aware about what is lion attitude? Why lion is the king of the jungle? Why only that animal has been called as a king of jungle? Is he tall? No, because the giraffe is the tallest, I can say that. Okay. Is he strong? Answer is no, because elephant is more stronger than the lion. Is he fast in running? No. Answer again is no, because cheetah, I can say that, is more fast than running. Then still, why we call a lion as an king of jungle? Mindset. Attitude. Exactly, because of its mindset or attitude. He has a different attitude, he has a different mindset. He to tackle with the problems, to deal with the problems. And most important, if you observe, lion is a social animal. That means social animals in the sense, that means lion is a used to hunt in even in like family. They have, lion has a pride, isn't it? So what we can say that like lion, when we are talking about the lion attitude, whenever he face a certain problem, for an example, हाथी आ रहा है, हाथी के इमीडिएटली माइंड में आ जाएगा, अरे भाई शेर है, बच्चों भागो, प्रॉब्लम से भागो. और जब लॉयन देखेगा कि हाथी आ रहा है, दिमाग में वो थॉट ये लाएगा, अरे ये मेरा शिकार है, मैं इसको डील करना चाहूँगा. So like that, this attitude, this behavior, it changed lion. This mindset, it changed. So if we are looking a problem as a problem, definitely we can never can deal that. But we can tackle it if you have that courage. No, it's okay. If every day is not my day, or we can tackle with this thing. If we correct our mindset, then definitely your behavior will change accordingly, and you can bring that changes in your life. If any student want to improve his own life or his confidence for now, so how he can start? For confidence, see again, you may feel that again and again I am talking about with the same thing, because see, all these things are connected with each other. That is nothing but about, it's here I can say that the mind. I believe that mind is very fickle, and I used to call that mind is nothing but our secretary. See, many times what happened, we let our mind to control ourselves. I believe that we should try to control, we should have the remote control in our hand rather than let our mind to control. That's why I called the mind as a beautiful secretary, because we give the order to the secretary, and accordingly the secretary behaves, isn't it? So rather than mind should give the like the order myself, no, in this situation you should react like that. No, I know that. From the past experience I learned that.
Okay, so in this situation, how I should behave? So I should give the order to the mind rather than I should depend upon the mind. Okay, so for that, see, we need to bring the certain changes. One story I would like to tell, that story has been shared by the Chetan Bhagat in his book, and that is about the like Vasu. So what happened, Chetan Bhagat ने कहा था कि वो एक ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, एक एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड करते हैं तो उन्होंने देखा कि जैसे वो एयरपोर्ट के बाहर आते, वेरी नीट एंड क्लीन एंड लाइक अ पर्सन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम. ऑब्वियसली दैट पर्सन वाज अ टैक्सी ड्राइवर, और वो सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहन के नहीं था, तो उसकी टैक्सी भी बहुत सारी क्लीन है. तो ऑब्वियसली चेतन भगत वेंट टू हिम एंड टू हिज वंडर ही ग्रेट हिम, वेरी गुड आफ्टरनून सर, कहाँ जाना चाहोगे आप, और उसके लिए दरवाज़ा खोलते. ही जस्ट टोल्ड हिम द सर्टन डेस्टिनेशन. देन अगेन दैट टैक्सी ड्राइवर ऑफर हिम, सर would you like to have some tea or a coffee? He said no, I don't want any tea or a coffee. He said sir, मेरे पास लस्सी भी है, आप अगर वो ठंडा कुछ पीना चाहोगे तो मैं वो भी ऑफर कर सकता हूँ. He wondered कि टैक्सी में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल कैसे हो सकती है. तो his next thing again, वो वासु, वो टैक्सी ड्राइवर उसको पूछता है कि सर आप रीडिंग करना पसंद करोगे, मेरे पास न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन भी है, सब कुछ. तो ये बहुचक्का रह जाता है. चेतन भगत सोचने लगता है कि ये कैसे हो रहा है, कि बिकॉज आई नेवर ऑब्जर्व दिस थिंग इन अ टैक्सी. सो विथ हिज क्यूरियोसिटी ही जस्ट आस्क्ड टू द टैक्सी ड्राइवर, हे आई एम वेरी मच अमेज्ड बिकॉज आई नेवर सीन सर्टन थिंग्स इन द टैक्सी. सो द taxi driver answer, that answer is very beautiful. Sir, earlier I also used to have the same kind of the typical taxi driver and the same typical taxi, but one day I realized that no, I have to change myself. मुझे वो बोलते हैं ना, यानी I just don't want to be a duck, I just want to be a eagle. And the day when I decide I want to be a eagle, I started bringing certain small changes in my life. The very first thing I can do, मैंने ये किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साफ सुथरे कपड़े तो पहन सकता हूँ, मैं अपने टैक्सी को नीट एंड क्लीन तो कर सकता हूँ. तो इससे मेरी तरफ लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया सर. फिर जैसे जैसे मेरी टैक्सी ज़्यादा बुक होने लगी, क्योंकि साफ़ सुथरी दिखती थी, मैं खुद साफ सुथरा दिख रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी रखना शुरू की कि मैं ये सोचता था कि मेरे कस्टमर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे. सो ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग द चेंजेस व्हेन ही डिसाइडेड दैट नो, वॉट एवर द लाइफ इज गोइंग ऑन, इट्स ओके, आई एम नॉट लाइक हैप्पी विद दिस थिंग, आई शुड चेंज माई सेल्फ, आई शुड चेंज माई बिहेवियर. ओके, आई जस्ट वॉन्ट to be like an eagle. When he changed his attitude and along with that bring certain changes, suddenly ऐसा होगा कि उसकी टैक्सी एडवांस में बुकिंग होने लगी. Isn't it? So if we bring certain minute changes, we can do many things. Like we can very first thing we can do whenever we are जब हम सुबह उठेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि वी शुड थैंक, वी शुड हैव अ ग्रैटिट्यूड. ओके, कि नो वॉट लाइक मैं एक फिर से नया दिन देख सका हूँ. इजंट इट? वी शुड हैव अ सर्टन पॉजिटिव थॉट इन आवर माइंड एटलीस्ट, ओके, इन द मॉर्निंग. और वी कैन डू अ स्मॉल थिंग्स करेक्टली, यानी छोटी छोटी चीज़ें में मैं ठीक से कर पाया तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कुछ टास्क मिला होगा कॉलेज में या स्कूल में और इन अ यूनिवर्सिटी, वॉट एवर द टास्क यू हैव गेटिंग, if you correct that on a time, that ultimately builds your confidence. आपको मान लो कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दी होगी और आप वो सही वक्त पे कर पाते हो, तो उससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. फिर अगर मान लो आप अपने लिए गोल सेट करते हो कि नो, ये क्लास टेस्ट में या ये यूनिट टेस्ट में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं इतने नंबर्स लाना ही लाना है. When you have that thought in your mind, obviously ना, that changes, that brings a certain changes in you. It completely depends upon how much you want that.
वो जिद कितनी है वो मार्क्स चाहने की, आप वो चेंजेस आ जाता है धीरे धीरे धीरे। जैसा वो गोल आप अचीव करोगे आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप सोचोगे अरे मैं वक्त पे असाइनमेंट सबमिट कर पाता हूँ, मैं इतने मार्क्स स्कोर सकता हूँ, तो आपका धीरे धीरे इस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू इंटरेक्ट मोर एंड मोर पीपल, you need to observe the people, you should learn from them, okay? And most important, you should not have any kind of ego, you should be a humble, क्योंकि हम जब दूसरों से सीखने की बात करते हैं at that time we should have the approach should like that कि मुझे सीखना है, उसके पास भी कुछ अच्छी चीज़ें है वो मुझे लेनी है, मुझे आत्मसात करनी है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। When you have this kind of feeling, definitely you can gain your confidence. मैं आगे एक वो पूछना चाहूँगा कि अभी इन दिनों हम देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत डिप्रेस रहते हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आजकल बहुत डिप्रेशन होते हैं, तो उसके लिए आपके कुछ टिप्स हम जानना चाहेंगे। लेजी फील करते हैं। हाँ, that is what we are, this discussion is all about that only. So the very first thing ना, we need to decide what exactly I just want to do. See, क्या होता है ना, मान लीजिए एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, ऐसे ही पड़े है ना, बहुत सालों से पड़े, कुछ नहीं हो रहा है, वो आराम कर रहे हैं, मस्त आपस में बातें कर रहे हैं, अरे तुम्हारा कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं है। एक दिन सडनली क्या होता है, एक आदमी आता है, वो छन्नी और हथौड़े से कुछ हर एक पत्थर को टटोलने की कोशिश करता है। अब ये लेजी जो पत्थर है ये आपस में बातें कर रहे हैं, अरे ये कौन जनाब है जो आए हमको तकलीफ दे रहा है, हिला के बात कर रहे हैं, हमको तकलीफ दे रहे हैं, मस्त लाइफ चल रही है, आराम से चल रही है, चलने दो ऐसे ही। लेकिन उन सब में एक पत्थर ऐसा होता है कि वो सोचता है कि नहीं, आई शुड नो ये क्या करना क्या चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये छन्नी और हथौड़े से क्या करना चाहता है, सो आई विल सपोर्ट हिम। व्हेन दैट पर्सन कम्स टू दैट स्टोन पर्टिकुलरली, ही जस्ट सपोर्ट। तो वो रियलाइज करता है, वो मूर्तिकार होता है कि मुझे जो पत्थर चाहिए वो मुझे मिल गया। वो उस पत्थर से जो उसको सपोर्ट करता है सुंदर सी मूर्ति बनाता है, और जो पत्थर सपोर्ट नहीं करते उनसे वो मंदिर बनाता है। तो कोई पत्थर उस मंदिर की सीढ़ी बनता है, कोई पिलर बनता है, और वॉटेवर, ओके, जिन पे लोग पैर रख के चले जाते हैं, और जिसने सपोर्ट किया था उसको रोज यानी हार पूरे यानी उसकी पूजा अर्चना होती है। आप समझ सकते हो कि मैं वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। If you want to do something, definitely you need to leave this thing. You need to bring the certain changes in you. You need to correct your behavior, and then you can achieve this thing. नहीं तो चलता है चलने दो, अगर ऐसा ही कैजुअल अप्रोच रहेगा तो then nothing will happen with you. There is one very famous phrase like that. If you want to fly like an eagle, you should stop hanging with the ducks like that. So हमें ईगल की तरह, हमें गरुड़ की तरह भरारी उड़ान भरनी है, तो ऑब्वियसली हमें बदकों के साथ रहना छोड़ना ही पड़ेगा। एक टर्म होती है सेल्फ मोटिवेशन, और एक है कि टेम्पररी मोटिवेशन, जिसको अभी यूट्यूब पे देख के सब टेम्पररी मोटिवेट हो जाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली। सो उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, लाइक हमें कब फील होगा कि हम अभी सेल्फ मोटिवेटेड है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं वीडियो देखने की, अब मैं कर सकता हूँ मुझे जो करना है। Correct. See, these changes, I feel that this process is slow process actually. It's not like that ki like in one day or 2 days you discover everything. It's not like that. When you start doing the small thing correctly, ultimately it builds your confidence. And as I said earlier, like in the morning, okay, like you should start your day with a certain positive thought. If you have a certain correct things, if you achieve your tiny goals, small milestone, then ultimately it brings a lot of biggest thing. And most important, you should start believing yourself. What is happening right now? We believe on the many physical things कि नहीं, अगर like वो कहते हैं ना, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, हम लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मान लो मेरे दोस्त ने कुछ कहा कि दैट अफेक्ट्स मी, मेरी टीचर्स ने मुझे कुछ कहा तो दैट अफेक्ट्स मी। सो रादर दैन दैट आई शुड बिलीव माई सेल्फ
बिकॉज आई नो वेरी वेल, मैं खुद को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि मुझ में क्या क्वालिटीज़ है. आई शुड लर्न व्हाट इज़ माई पॉजिटिव, आई शुड नो व्हाट इज़ माई वीकनेस, एंड आई शुड put effort how I can turn my negatives into the positive. And when you start doing this thing ना, definitely ना, वो बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी को खींचते हैं कि आपके सराउंडिंग्स में भी वो एनर्जी पर्कुलेट होगी. एंड व्हेन यू सराउंडेड विद द सर्टन पॉजिटिव पीपल्स, आई डोंट फील दैट कि यू नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द आउटसाइड. डेफिनेटली यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, बिकॉज दिस इज, आई बिलीव दैट, स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज नथिंग बट द source of an energy. Okay, and if we turn that to a certain positive energy, you can feel that energy. That definitely gives you the motivation every day. So I want to ask about the never giving up attitude. So we have always seen that you have the never giving up attitude. So how to build up the attitude of never giving up? See, I earlier talked about the law and attitude. Okay, so how exactly we can have? I would like to express this with a simple one thing. There was one writer who got retired, and one day he just put a certain lines on a paper. वो लिख रहा था कि इस साल मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इस साल मेरा बहुत बड़ा पेट का एक ऑपरेशन हुआ, ये साल मेरे लिए बहुत बुरा था. दूसरी लाइन लिखता है, ये साल मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इस साल मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया. इस साल मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरे फादर जिनके मैं काफ़ी क्लोज था, ही डाइड इन दिस ईयर्स. ये साल मेरे लिए बुरा था क्योंकि इसी साल मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें से वो बाल बच गया, गाड़ी का बहुत सारा खर्चा हुआ. यू नो व्हाट, व्हेन ही रोट दिस थिंग ऑन अ पेपर, हिज वाइफ केम देयर. She read that and she put another paper. ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि काफ़ी लंबी समय से मेरे साथ पेट की बीमारी चल रही थी. फॉर्चुनेटली इस साल मैंने उसका ऑपरेशन करवा लिया, अभी काफ़ी मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ. ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैं मेरी 30-40 साल की नौकरी ईमानदारी से पूरी करके I got retirement in this and now I can give the ample of time for my hobbies. तो ये साल मेरे लिए अच्छा है. ये साल मेरे लिए अच्छा है. हाँ, मेरे पिताजी, लेकिन वो at the age of 94 कुछ बिना किसी बीमारी के, बिना किसी दुख के इस जीवन की यात्रा समाप्त करके परलोक सिधार गए. उसमें सिर्फ एक अच्छी बात थी कि उनको कुछ भी तकलीफ नहीं थी, जाते वक्त भी उनके चेहरे पे एक सुकून था. ये साल मेरे लिए अच्छा था. हाँ, बेटे का एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो उस जानलेवा एक्सीडेंट से बच गया. गाड़ी का नुकसान हुआ लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरे बेटे की जिंदगी बच गई. See, the thing is that the situation is the same. It's completely depend upon ourselves, how we are looking to that situation. सिचुएशन वही थी, उसमें कुछ चेंज नहीं था. ये हमारा नज़रिया है कि हम उस तरीके को किस नज़रिए से उसको देखना चाहते हैं. सो इट्स लाइक दैट. सो इफ वी ऑलवेज हैव अ सर्टन पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज थिंक अ पॉजिटिव, डेफिनेटली आई फील दैट वॉट एवर द थिंग वी शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट. तो कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं. वी शुड बिलीविंग इन दैट कि डेफिनेटली गॉड इज हैविंग अ ब्रॉडर प्लान फॉर मी. और ये फिर यूट्यूब पे या किसी और माध्यम से मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने पहले भी बात की थी, सेल्फ मोटिवेशन हम डिस्कवर कर लेंगे तो हमें बाकी फिजिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. आजकल हम ये देखते हैं स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस ही नहीं कर पाते. वो कैसे करें कि वो एक पर्टिकुलर एक ही थिंग पे फोकस करे एट ए वन टाइम. They are always confused to do one thing or that thing. So how to make choices? How to be focused on only one thing? For that, I feel that we should understand ourselves first. See what happened. It's very easy to point out others कि आप यहाँ पे गलत हो, आप वहाँ पे गलत हो. हम ये भूल जाते हैं कि मुझ में भी कुछ खामियाँ हैं और उसके लिए ना हमें अपने आप को जानने की पहले ज़रूरत है.
And for that, I would like to give the simple suggestion. We should start the meditation. We should start learning ourselves. ये focus, concentration, this is all everything with our mind. And I earlier said, mind is fickle. If we are able to control our mind, if we got the remote control of our mind, ये चीज़ें पूरी बंद हो जाए. And for that, definitely I would like to suggest we should start the meditation. 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी है, आप शुरू कीजिए. You may discover certain changes. कोई मूवी जो आप सजेस्ट करना चाहोगे फॉर द स्टूडेंट? There are so many. I'm not like saying like that कि one particular movie, because I believe that कि आपको जो करना है वो करो. Whatever you want to do, you should do. See, thing is that कि I don't have that kind of feeling कि मुझे ये नहीं या मुझे वो नहीं देखना या वो नहीं. Whatever the thoughts comes into the mind, do whatever you want to do. Because I strongly believe that कि जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग अभी तक रही है, उस तरीके से ही मेरे विचार, जिस तरीके से लोगों के साथ में रहता हूँ, उस तरीके से मेरे विचार बनेंगे. तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे वो मुझे सही राह ही दिखाएंगे. तो मैं डेफिनेटली मैं अच्छी मूवी जो मेरे विचारों के से साथ सिंक्रोनाइज कर सकती है, मैं डेफिनेटली उनके साथ जाऊंगा. तो कौन से रिकमेंड करोगे? लाइक कोई भी ऐसे हो जिससे कुछ अनवर्ड हो लाइफ में, ऐसे कुछ? see, it's not like that. It completely like depend upon like me, which can give me the happiness, and I feel that I'm enjoying each and every. You don't believe that means I'm very much emotional person. I used to cry because this is nothing but an emotions, no? Like whenever I saw in a certain emotional scene in either in a TV serial or in a film also, I used to cry. So I feel that let it be, let the tears come out, because this is it's very natural. कि जैसा कोई कॉमेडी सीन देख के आप हंसते हो, खिलखिला के हंसते हो, तो अगर मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो भी लेता हूँ. इट्स वेरी नेचुरल. सो आई एम एंजॉइंग बेसिकली वॉट एवर लाइक कमिंग टू द माई वे. आई एम एंजॉइंग. अगर कोई अच्छी मूवी चल रही है तो मैं उसका पूरी तरीके से स्वाद लूँगा. So I want to ask one thought is there. Smiley day can make your day. So what's your thought on that? डेफिनेटली. आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हम हंसते कब है? जब कुछ अच्छा अपने साथ हो रहा है. सो वी शुड स्टार्ट बिलीविंग कि मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा या मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, तो वो स्माइल अपने आप आ जाएंगे. एंड व्हेन दैट स्माइल कम्स फ्रॉम द इनर ना, डेफिनेटली वो चेहरे पे दिखेगी आपकी. आप वो खुश महसूस कीजिए, वो खुशी महसूस कीजिए. हमारे जो डिसीजन होते हैं बहुत बार वो हमारे पेरेंट्स को लाइक नहीं पसंद आते हैं और सोसाइटी को भी पसंद नहीं आती. मे बी होता है बहुत बार लाइक किसी को स्टार्टअप करना है, किसी को कुछ करना है, सो वहाँ पे कैसे टैकल करोगे? इट्स वेरी सिंपल. This is very natural and this is very common problem. It happened with me also. Many times it happens. And we used to call that this is a generation gap. ऐसा कुछ नहीं रहता. It happens. It's very normal. See, what we can say that we should accept. When we are in accepting mode ना, we should understand कि सामने वाला क्या कहना चाहता है. उसकी जब तक हम चीज़ें नहीं, होता क्या है, why the argument is that we just want to always prove our point कि no, I am the correct and we just want to prove the other that you are wrong. वहाँ पे argument होता है. But if you start listening, okay, see, Ganpati, I strongly believe Ganpati Bappa is having a long years. What that suggests that you should listen more, and Ganpati Bappa's mouth is very small and speak less. So what I learned from the Ganpati Bappa that you should listen more and speak less, isn't it? So until and until you are not listening, okay, सामने वाला क्या कहना चाहता है आप उसको समझोगे ही नहीं तो आर्ग्यूमेंट होगी. आप पहले समझ लो. हो सकता है कि आपके मदर या फादर आपका नजरिया नहीं समझ पा रहे. उनकी पूरी बात आप पहले सुन लीजिए, शांति से अपना पक्ष रखिए, बताइए कि मैं क्यों ये करना चाहता हूँ या ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, इसमें क्या भलाई है, इसमें क्या एडवांटेजेस है. अगर उनके अनुभव से वो कुछ डिसएडवांटेज या कुछ चीज़ें बताते हैं तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए. ओके, बिकॉज आफ्टर ऑल वॉट एवर दे आर टेलिंग ना, फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस दे आर टेलिंग.
हम एक्सपीरियंस या अनुभव किस चीज़ को बोलते हैं कि जो हमने पास्ट में गलतियाँ की रहती है उनको ही हम अनुभव बोलते हैं, उनको ही हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, एंड वी लर्न फ्रॉम दैट, इजंट इट? At the same time, when you are talking with your younger brother and younger sister, you are also very much authoritative, isn't it? So likewise, we should understand, we should be in acceptable mode. Whatever they are saying, that is for me only, because they are my parents, they have my concern. If my friend is want to correct me, we should understand, अरे after all he is my friend. मेरा concern करता है वो, इसलिए मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. So we should understand that. सिमिलर क्वेश्चन से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जनरेशन वाइज माइंडसेट अभी सब चेंज हो रहा है, इस बच्चों के माइंडसेट अभी न्यू जनरेशन वाइज चेंज हो रहा है, तो उसमें आपका क्या विचार है कि भाई ये जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो उनके जनरेशन की जो टेक्निकल एडवांसेस है उसकी वजह से लेते हैं? तो No, I believe that nothing is going to be changed about the mindset. It's only thing is that the adaptability. See, situation के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए. Yes, we are little bit lagging to reach to that extent. That means what? See, what is happening? If I'm not understanding how to tackle with the situation, for an example, I would like to give this my simple example. See what happened. I have a son. When he was of 5, I guess 4 or 5 years old, उसको एक आदत थी क्रेयॉन लेके ड्राइंग बनाने की, तो दीवारों पे ड्राइंग करते रहता था. सो वन डे व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द आउटसाइड, आई सॉ दैट माय सन वाज ड्राइंग समथिंग ऑन अ वॉल. सो आई वाज वेरी एंग्री. आई सेड, हे व्हाट यू आर डूइंग, आर यू स्टूपिड? छोटा 4 या 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसको भी मन है, उसको भी माइंड है, उसको भी समझ रहा है कि पिताजी चिल्ला के मुझे बता रहा है. व्हाट ही हैज डन, वो और करने लगा. Isn't it? You know what? Next time जब मैं उससे बात करने के लिए गया, hey baby, what happened? उसने सबसे पहली चीज़ क्या की होगी? Immediately he ran to the wall and again started drawing. Isn't it? What I have done? I just asked him, hey, come here. बेटा तुम बड़े हो गए हो, ये चीज़ें मत करो, ये खराब दिखती है, गंदी दिखती है. Very politely and humbly, I just asked him, don't do this thing. Now you are a grown up child, don't do this thing. That was the day, and he never did that thing again. So I feel that the words has the power. If at the correct moment, at the correct situation, you select the proper words, you can tackle, you can handle any situation. And we should learn that thing, and we should transfer that thing to the generations. वो दिखता है उसके बिहेवियर में. मैंने उसका यूट्यूब चैनल चेकआउट किया था, आपका भी एक वीडियो है उसमें, आपने क्वेश्चनिंग करी है. सो जो होता है ना एक, बिकॉज उस एज में अगर वो उस टाइप की वीडियो बना रहा है तो डेफिनेटली उसका जो एक कॉन्फिडेंस है और वे ऑफ थिंकिंग है बाकी स्टूडेंट्स से या फिर बाकी बच्चों से वो अलग दिखती है. Thank you. आपकी इंजीनियरिंग लाइफ कैसी थी? लाइक आपने चूज़ क्यों की, आपको इंजीनियरिंग क्यों करनी थी? To be very honest, to be an engineer, that was my mother's dreams. First of all, I didn't know anything about the engineering, but from the childhood, I want to be an engineer because it was my mother's dream. Okay, and about my engineering life, see, I literally enjoyed my engineering. If I'm saying that my student, they should enjoy that journey, it means that definitely I enjoyed that journey, because that moments are the precious moment for me. It's not like that I'm not having any stressful day or anything. Yes, I do have a stressful day or a hectic day, but whenever I have a certain stressful day, I used to recall that my moment, golden moments. Okay, my engineering days. Okay, so that gives me somewhere the relaxation. So what I feel that whatever coming to your side, whether it is your submissions, whether it is assignments, your class test, unit test or university paper, you just enjoy, because see, these are the certain moments which are obviously going to check you at all the level, and these are nothing but giving you the life lessons also. So you just enjoy. This is a wonderful journey. जैसे हम कोई गांव को जाते समय होता है और हमारी जर्नी एक जैसी नहीं रहती है,
कुछ ना कुछ रास्ता एक जैसा नहीं रहता, अप्स डाउन होते रहता है, तो इट हैपन्स. जस्ट एंजॉय करो इन चीज़ों को, इन पलों को यादगार करो, समेटो जितना हो सके आप, एंड देन you will discover that like in your like working life these moments are nothing but the golden moment for you. जैसे सब लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स एक रात पहले स्टडी करते हैं, तो आपने भी ऐसे ही की है या फिर आप पहले से प्रिपरेशन करते थे कुछ अलग? I can say that ki, see what I have learned in the engineering, that is nothing but about the planning. See, the basic thing, I believe that engineers are known for their planning. So I have never done my study in one day, never ever. Everything I plan, I just planned. I put a certain target for myself ki no, I need to do this thing for this particular days, like that. So whenever the examination were there, my roommates, they used to do the study like day and night, and I was the person like that, हाँ सोते देखते सुबह उठेंगे, हाँ इतना पढ़ना है पढ़ेंगे गए जाएंगे. So that actually my planning, that helps me a lot, definitely helps me a lot. So I also want to say the same thing to my student also, just plan every single things. इस तरीके से आप चीज़ें करोगे कुछ भी, that particular habit I brings to my life also now, professional life also. कुछ भी चीज़ें करने के लिए मैं उस चीज़ को प्लान करता हूँ. मान लीजिए कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो उसकी प्लानिंग मैं शुरू से 4 या 5 महीने से कर देता हूँ कि हाँ इस महीने में मुझे प्लानिंग लेनी है, इस तरीके से मुझे सेविंग करनी होगी. सो दैट इज़ फॉर व्हाट आई बिलीव दैट कि वी इंजीनियर्स आर नोन फॉर दैट. सो वी शुड इम्प्लीमेंट दैट इन आवर स्टडी ऑल्सो. यू शुड प्लान एवरीथिंग. Sir, do you think that you changed from that person to that your person now? Definitely. With the age certain and with the experience, I am growing a lot. Yes, from the mistakes I have done in my past, yes, I learned a lot. And every day I feel that the new version is coming, and I also feel that the yet new version has to be yet to become. So new updating, I'm updating every day. I feel that, yes. And sir, you want to continue growing. There are some thoughts that certain person go up to a certain point, and then he said, I am satisfied now, I will be in that my zone only. So is your take to like that, or you still want to have some space of growing yourself? See, right now, somewhere I believe that I discover that when we want, ये want word जहाँ आता है ना, that brings unhappiness. तो इस want शब्द को ही मैंने हटा दिया. I'm enjoying whatever the day like coming in my life. I'm just enjoying. I'm feeling happy. It's okay. And I just prepare myself for any kind of situation accordingly. What is your view on spirituality, or how it can affect the student life? Somewhere I strongly believe that we are connected spiritually. Yes. As I earlier said, we are the source of energy. अगर कोई ऐसी ताकत नहीं होती, because we individual as an a source, we are spiritually connected with each other also. We strongly have that, we feel that energy also, that strong energy. So yes, I do believe that we are spiritually connected, and we has to be. So last question, आपको सेटअप कैसा लगा, and how? No, this is wonderful. In fact, this is a very good initiative. I feel that you should connect more and more people in your podcast. And yes, this is the certain use of a social media. This is what I am expecting from my student, that you should reach to the maximum student, maximum community. Okay. So all the best for this. Thank you. Thank you, sir.